So let me share the screen with you. Yeah. So in the previous session, we have solved this example that uh, if we are given the rules, production rules, and addition to that, if we have lexicons, then we can create the particular sentence. Okay. And that can be, there can be two different approaches for creating the sentence. One is top down, one is top down parsing, right? Top down parsing में हम क्या करेंगे? We will start with the start symbol and then we create this sentence. ये पूरा sentence हम create करेंगे. And other one is bottom up. दूसरा क्या है? Bottom up, right? So bottom up parsing में हम क्या करेंगे? So we will start with bottom. That means we will start with the sentence and then we backtrack when we goes upper side and we reach to the starting state, right? So there are two different approaches, and in that also we have so generation of the sentence is actually called as derivation, deriving the sentence. So derivation can be leftmost derivative, right? Derivation can be leftmost derivative or it can be rightmost derivative. Leftmost derivative होगा या तो फिर rightmost derivative होगा, right? Leftmost derivative का मतलब ये होगा कि every time we will explore the leftmost, the non-terminal which is on the leftmost position in the tree. Third one, right? Like this. Suppose we have S starting symbol, then we can say this is NP, noun phrase, and then the second thing is VP, verb phrase, right? Then if we choose NP first, if we explore NP first, right? Anyway, anything, then every time, suppose here it is determiner and here it is NP. Again we choose leftmost one, right? So if we select in this way, that is called leftmost derivative. And if we select in the other way, first we choose this VP and then we have option, then we choose this one, whatever it is. So this thing is called as rightmost derivation. Fine. So the grammar is ambiguous, means it can generate ambiguous tree, multiple parse tree for one sentence, then the grammar is called as ambiguous grammar. So apart from that, I told you to solve this example. Let me rub this. Right. I told you to solve this example, that what are the things that we need to add, right? So the things that we need to add in the lexicons is boy and brown. So what is boy? Boy is the noun. Boy क्या होगा? Noun. So we will add boy here in the noun phrase, and brown is nothing from, not verb, it's an adjective. Brown is adjective, so we add one more thing. So adjective is brown. So we will add one more lexicon, one more category of lexicons, right? And apart from that, what we have to add in rules, उसमें क्या add करना पड़ेगा? Because we want to generate adjective, हमें adjective generate करना है, तो adjective तो हमें कहाँ से जाना पड़ेगा? So we need to add from noun phrase. We can even create adjective into noun phrase. ADJ and noun phrase. So we will add this one rule. ये एक rule extra add करेंगे और ये दो
lexicons ऐड करेंगे. And then after adding this, if you want to create this sentence, the question 2, then we are able to create it. Right? That's it, the answer of the question. And I told you to practice these questions also. Right? I told you to practice these questions. I don't know how many of you have done this. If you have done this, then please write it down, done, or at least if you have tried, then you can write down in the chat section. आप chat section में मुझे बता सकते हो कि आपने कुछ try किया है या नहीं किया. If you have not done, no need to write anything. If you have done, you can write that I have tried 1, 2, 3 or 4. आपने past tree generate किया है या नहीं किया? That I want to know. Anyone? Okay. What you want? Explanation of what, Ruchika? Explanation of the past tree? So have you been there in the previous lecture? Okay. So it's a simple one, right? So first of all, for example, we take second sentence, right? For example, we take second sentence. The boy ate an apple. So first of all, we need to okay. Let me go here, right? यहाँ पे मैं आपको let me rub this. Just a second. Okay, so let me write down this sentence, right? वो sentence लिखते हैं कि the boy, right? Ate, ate, ate an apple. This is the sentence, right? अब हम ये sentence को create करेंगे. Sorry for this. Boy ate an apple. Now, first of all, we should understand कि ये कौन से part of the speech में आता है. What is the? The is present. The is delimiter. तो हम क्या करेंगे? What we want? The is delimiter. What is boy? Boy is noun. What is ate? Ate is verb. So we will add ate here. यहाँ पे हम ate add करेंगे, right? And n is also delimiter, right? And apple is noun. तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? Apple. And we will add boy also. यहाँ पे एप्पल भी ऐड किया और यहाँ पे हमने दूसरी क्या चीज ऐड की? बॉय. तो जो भी चीज यहाँ पे सेंटेंस में है, that must be there in the lexicons, right? That must be there in the lexicons. So what we want delimiter, noun, then verb, then again delimiter and noun. We want this, right? हमें ये सीक्वेंस चाहिए. अब we can see from the rules के हिसाब से कि delimiter और noun जो है ये हमें कैसे मिलता है? हमें मिलता है noun phrase अगर हमारे पास होगा then we can get this. यहाँ पे भी क्या मिलता है? Noun phrase हमारे पास अगर होगा then we can get this. So delimiter, or we can say, okay, just a second, let me show you in more easy way, right? So I am showing you both the things. So noun can be derived from noun phrase. Noun can be derived from noun phrase. See, this delimiter and noun can be combined
and that can be derived from noun phrase. यहाँ पे देखिए D and NP किससे combine हो सकता है? NP से, right? Then the same thing can be applicable here. Noun phrase can derive noun, and delimiter and noun phrase can be derived from noun phrase, right or not? See, this verb and noun phrase, verb और noun phrase किससे derive हो सकता है? Rule number D, not C, rule number D. So it can be written as verb phrase, and this noun phrase and verb phrase is combined into sentence, right? So this is bottom up. यहाँ पे हमने sentence से start किया, भले ही रिवर्स साइड है, लेकिन हम कहाँ तक पहुंचे? सेंटेंस तक. तो आपको क्या चाहिए वो पहले देखना है. So if you want to try with top down parser, it's simple. So first of all, you can apply S tends to NP and VIP, that is verb phrase. Then this NP is divided into determiner and NP, right? So every time we are exploring leftmost one. Now we are exploring D. So determiner will be replaced by the. Determiner हमने क्या दे दिया? The. Fine. Then NP will be divided into noun, and noun is boy. Noun क्या होगा? Boy. Fine. Then again this VP. Next is VP. VP is divided into V into NP. The same thing that we have done here. Verb B means ATE. Verb हम सीधा replace किससे कर सकते हैं? ATE, right? And this noun phrase is divided into determiner and noun. Determiner and noun. So determiner is N, right? And this noun is apple. ये noun क्या है? Apple, right? So from this you can see the boy ate an apple. So this is how we can create a parse tree. So this is this scenario. ये जो चीज है वो है bottom up, और ये दूसरी चीज जो है, दूसरा एग्जांपल जो हमने लिया है, that is top down. So we have used both the methods for this. Fine. So that's it. You can create the sentences for this. So you can add, say, green is adjective actually. So हम क्या add करते हैं? Small adjective है. So we should know, and then we can add that in the lexicons, and we can use the rules. Simply creating the examples, right? So moving ahead with this, so grammar and parser. We have seen the example. So we have production grammar contains start symbol, production rule, terminals and non-terminals. Terminals are called as lexicons also, right? And non-terminals are also called as variables. So actually using grammar, we can understand the weak generative capacity of the grammar and strong generative capacity of the language, not grammar. Using the knowledge of grammar, we can explain, we can understand this two capacity. What is the meaning of weak generative capacity? The set of sentences that are contained within the language. कितने language, कितने sentence हम ये grammar से create कर सकते हैं? Because अगर हम grammar पूरा नहीं है, सारे production rule add नहीं करेंगे, तो we are not able to generate each and every sentences. So based on the grammar, we have option, right? So that is called as weak generative capacity. And what is strong generative capacity? By which the structure to be assigned to the each grammatical sentence of the language. Suppose if you talk about English language, तो इतना strong है वो हमें कैसे पता चलेगा? If your grammar can generate each and every grammatical correct sentence in the English language, then it is having more strong generative capacity.
means we can say strong generative capacity is high. So from the grammar, we can understand the capacity of the language, right? Then we can use augmented transition network using with in syntactic analysis. This is one option, which so actually I have explained to you. We are going to use top down parsing. In augmented transition network, we are going to use top down parsing. जो चीज हमने example solve किया है, right? Using that, we can incorporate knowledge of different rules, different parsing rules, and we can have efficient system, right? And augmented transition network is actually built upon finite transition machine. Finite transition machine कोई भी सेंटेंस को आपको जनरेट करना है, पार्स करना है, for that we use finite state machines. And एग्जाम्पल स्टेट मार्को मॉडल. मार्को मॉडल हमने क्या किया था, अलग अलग स्टेट जनरेट किए थे ना. तो ये एक स्टार्टिंग स्टेट है, यहाँ से कुछ रीड करके हम दूसरे स्टेट पे जाएंगे, यहाँ से दूसरा कुछ रीड करके हम यहाँ पे रहेंगे. सो दिस इज कॉल्ड एज फाइनाइट स्टेट मशीन. और एक चीज ऐसी होगी कि जहाँ पे एंड में हम जाएंगे, दिस इज फाइनल स्टेट. उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल स्टेट. दिस इज स्टार्टिंग स्टेट. तो कभी भी कोई भी सेंटेंस को हमें जनरेट करना है, तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट कब है, अगर हम वो सेंटेंस को जनरेट करते टाइम स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट करें, और अगर हम फाइनल स्टेट पे पहुंच जाए जब आपका सेंटेंस जनरेट हुआ, एंड इफ यू रीच टू द फाइनल स्टेट, देन द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट. चेक, राइट. एंड इफ यू वांट टू टॉक अबाउट प्रैक्टिकल वे, ये जो ट्रांजिशन होगा एक स्टेट पे से दूसरे स्टेट पे जो हम जाएंगे, दैट विल बी सिंपली सब रूटीन कॉल. यहाँ से इस सब रूटीन का कॉल करेंगे, इससे इस सब रूटीन का कॉल करेंगे. दैट इज द टास्क इन ऑगमेंटेड ट्रांजिशन नेटवर्क, राइट. सो द आर्क, ये जो सारे नोड्स है, और आर्क पे हम क्या लिखेंगे, इट कैन बी स्पेसिफिक वर्ड इन एंड फ्रॉम, or we can say any category from the noun, or we can build a structure that will form part of the final parse. हमें पूरा प्रोसीजर लिखना पड़ेगा, that will help you in parsing the sentence from the initial state, right? And the thing which we have to keep in our mind is we are going to use top down parsing. Means we will start with a start symbol, and we will transit, we will do different states, different nodes. और ट्रांजिशन के लिए हमें क्या चाहिए, we need arc. और arc पे क्या लिखा होगा, ऐसे वर्ड्स लिखे होंगे, noun, in, verb, such kind of words are noun, verb, that determiner. This kind of things are written in the arc, right? So there are different approaches for syntactic analysis. We can use top-down parsing. We can use bottom-up parsing. I have shown you the example for both, and even we have different algorithms: CYK algorithm, early algorithm, chart parsing algorithm. Even we can use context-free grammar. Context-free grammar के बारे में मैंने आपको basic चीजें बताई थी, right? So we are using actually context-free grammar for parse tree generation. English language के लिए, और कोई भी हमें, अगर हम बात कर रहे हैं artificial intelligence की, natural language processing, then we are going to use context-free grammar. And addition to context-free grammar, we will be using probabilistic context-free. So rather than just assigning the rules, production rules जब हम define करेंगे, उसके compare में we can assign probability also. Just a second. So there are different approaches. We have not seen each and every approaches, but in future, if you want to apply, you can use these approaches for syntactic analysis. So moving ahead with this. So the next section, after assigning the syntax, the next section that we have is semantic analysis.
we need to understand the meaning of the sentence. Right? We want to assign the meaning of the sentence. So once you have syntactic parse tree, or once you have checked the syntax, the sentence is grammatically correct, then we move towards next step, and we try to understand the meaning of the sentence, right? So we will do the representation in such a way that we can understand meaning of the sentence, and the representation are different. We can even use first order logic, right? First order logic का मतलब क्या होता है? For example, if I say I like cricket, तो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में हम क्या कर सकते हैं? We can define one function like, and I can pass on to argument I, then दूसरा क्या पास करेंगे हम? Cricket. So this is the way. Yeah, we have seen examples. ये चीज के हमने एग्जाम्पल देखे, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के बारे में हमने बहुत पहले सीख चुके हैं, राइट? इन AI only. So we can use first order logic for representing the sentence to understand the meaning, or we can use semantic network, right? So semantic network के examples भी हम solve कर चुके हैं कि sentences को semantic network के form में हम कैसे convert कर सकते हैं, right? So if you want to check what are the things, what are the semantic example of semantic network, so you can see from this network. This is the example of semantic network. So I want to print Ali's init file. You can convert that want and I. We can create relationship between want and I. Who want? So the relationship is who. Want what? I क्या चाहता है? I want to print. And who want to print? I. So that is the relation. Print क्या print करना चाहता है? Printing the file. किसकी file? Whose file? And which type of file? So from this diagram, you can understand the meaning of the sentence by asking who, what, how, right? So you can even use semantic network also. So we have seen these two things using which we can have semantic analysis, right? So we are not going in detail of these two methods now, because we have invested enough time for understanding these two knowledge representation approaches, right? So we need to understand the meaning of the sentence. So first we try to map with the whether it's grammatically correct or not, and if it is grammatically correct, then we move towards meaning association. हम semantic add करेंगे, right? And that depends on what is the output of our natural language processing system. हमारा जो भी natural language system हम बना रहे हैं, उसका output क्या है? What is the target language? And based on that, we will be using different approaches. So there are two categories. One category is your natural language system, जो भी आप system बना रहे हो, that is इनपुट में इंग्लिश लैंग्वेज अगर हम कंसीडर करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में इनपुट आएगा और उसी के लैंग्वेज में हम आउटपुट देंगे. फॉर एग्जांपल चैटरबॉट. अदरवाइज द अदर पॉसिबिलिटी इज नेचुरल लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ अदर लैंग्वेज, कोई दूसरे प्रोग्राम का पार्ट है. फॉर एग्जांपल आप गूगल पे सर्च करते हो
और आप अपने नेचुरल लैंग्वेज में सर्च करते हैं, और सर्चिंग के लिए एक एल्गोरिथम है और उसका पार्ट है आपका नेचुरल लैंग्वेज। और फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटाबेस है, डेटाबेस में आपको क्वेरी लिखनी है, बट क्वेरी सामने वाले यूजर को नहीं पता है, तो सामने वाला यूजर जो भी इनपुट देगा अपने लैंग्वेज में, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कन्वर्ट दैट इनपुट इनटू द डेटाबेस क्वेरी, और वो क्वेरी को आप पास ऑन करोगे। जैसे आपका डेटाबेस में आप क्वेरी पास ऑन करोगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ कि नाउ यू डोंट हैव टू, अगर सामने वाले ने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा है, दैट डजंट मीन यू हैव टू गिव आंसर इन इंग्लिश। योर टारगेट लैंग्वेज इज नाउ डिफरेंट। इफ यू टॉक अबाउट डेटाबेस क्वेरी, you must write you must return the legal input query to the system. So the natural language can be a part of it, part of any other expert system, or itself is a system. तो दो ऑप्शन है, दोनों में अलग अलग कैटेगरीज आपकी रहेगी। फाइन। So which language what we have to choose based on the target language, we can define the sentence. Now semantic analysis is done, is divided into two parts. The first part is lexical semantics, means we will be understanding meaning of individual word. पूरे सेंटेंस में हर एक चीज का मीनिंग क्या है, हर एक सेंटेंस का मीनिंग क्या है, वो मीनिंग हम समझें। वर्ड का मीनिंग, हर एक वर्ड का मीनिंग। तो what we do, we divide in morphological analysis, we have divided our sentence into words. Now we'll use dictionary and we simply assign the meaning. Yeah, there are some words, ऐसे थोड़े बहुत words होंगे जिनका मीनिंग एक से ज्यादा हो सकते हैं, and there are so many words in the English language. English language में ऐसे बहुत सारे words हैं जिसका मीनिंग अलग अलग हो सकता है। So we need sentence level processing. हमें क्या चाहिए? Sentence level processing. मतलब हम सिर्फ एक वर्ड का मीनिंग समझ लेंगे ना तो नहीं चलेगा। We need to understand the meaning of combination of words. So we will do combination of multiple words. तो एक साथ दो तीन वर्ड्स होंगे, उनका कॉम्बिनेशन करेगा, उसका मीनिंग समझिए। रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन वर्ड्स, जो वर्ड्स है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ वर्ड, जो वर्ड्स आपके लिखे गए हैं उनका ऑर्डर क्या है। व्हाट इज द कंटेक्स्ट, व्हाट इज द सिमेंटिक स्ट्रक्चर, एंड we use our real world knowledge to understand the meaning of the sentence. So just lexical semantics is not enough. To understand meaning of the sentence, we need to consider this part also. Sentence level processing भी required है, right? और sentence level processing को हम, ये lexical analysis है, it's simple. We'll divide into different words and that is called as word. हर एक word का meaning समझेंगे, उसको हम बोलेंगे word sense disambiguation and or lexical disambiguation. The process of determining the correct meaning of the word. वर्ड का करेक्ट मीनिंग समझने के लिए जो हम बोलते हैं उसको हम बोलेंगे word sense disambiguation. Right? So it is very simple. We will use dictionary and we will assign the straightforward meaning. Sometimes to understand the meaning of the sentence, कभी-कभी ऐसा होगा कि आपका सेंटेंस का मीनिंग समझने के लिए हर एक वर्ड का इंडिविजुअल मीनिंग अगर आपने समझ लिया तो इनफ हो जाएगा। Sometimes it may not require to combine multiple words to understand the meaning of some words are, some sentences are very straightforward, right? So at a time lexical analysis, lexical semantics is enough, but we have some sentences in real life that may require composition semantics. Sentence level semantics is also called as composition semantics. So in this what we understand, in this we will understand how words combine to form a larger meaning. एक वर्ड का मीनिंग है लेकिन एक से ज्यादा वर्ड को हम कंबाइन करेंगे तो कुछ बड़ा मीनिंग आपको मिल सकता है, राइट? द कंपोजिशन सिमेंटिक्स में हम क्या समझते हैं कि द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट. यस, इट इज इंपॉर्टेंट, बट हाउ द सेंटेंस इज कंस्ट्रक्टेड also plays an important role. For example, I like you. यहाँ पे you is the object and you like me is different way. This is subject. So we can say the same word is used, you and you, but यहाँ पे you का meaning, ये sentence का आप you का formation करोगे तो मैं आपको पसंद करता हूँ, that is meaning, और
यू लाइक मी का मतलब मीनिंग क्या होगा, आप मुझे पसंद करते हो। तो यू कहीं पे आपको बोला हमने, कहीं पे आप, तो डिफरेंट मीनिंग, वर्ड की पोजीशन से भी हमें चेंज करना पड़ेगा। So, though we have same words, we can have different meaning, and we can check by ordering, and we can check by combining the sentence. Or then we can simply understand the lexical semantics, means meaning of the word, each and every word, plus composition semantics. Combinedly will be formed as semantic. Semantic analysis का meaning क्या होगा, दोनों का, and this is called as principle of compositionality. इसको हम क्या बोलेंगे, principle of composition. Fine. So just lexical semantics will work in some of the cases, but very few cases are there. We need composition semantics to understand the meaning of the whole sentence. And before we understand that, let us understand basic building blocks. The semantic system आप बनाओगे, जैसे आपने क्या create किया था, you have created semantic network, तो उसमें आपने node create किए थे, तो we have different blocks for understanding. So we can represent entities. What is the meaning of entities? It is the individual. It represents the individual. It can be a person, it can be a location, something fixed. So Gujarat, Rampyari, Raviraj, anything that are called as entities. What is concepts? It represents general category of individuals, right? So if I say I can represent using, for example, Yas, then Ruth, then Jai, for example, these all are entities, but we combine all the persons of class 7, IT 7 semester, right? So that is called as group, and that is IT 7 is represented as concept. Any person or any vehicle, group, general category, animals, and we can have relationship between entities and concepts. For example, Ram Pyari is a vehicle. Suppose मैंने अपनी बाइक या कार है, उसका नाम मैंने राम प्यारी दिया है, तो राम प्यारी is a vehicle. So that is how we can understand the relation, and after defining relation, we can understand the meaning between entities and concepts. Apart from that, we have predicates. It represents the verb structure, how your meaning is associated, how you can assign semantic rules are called as predicates. Like how you can do transition are called as predicates. So one of the option example of predicate is case grammar. Actually case grammar is the grammar जो हमने पहले grammar देखा वो syntactic grammar था, in which structure of the sentence is analyzed, that are called as case grammar. जिसमें हम structure को analyze करते हैं उसको हम बोलेंगे case grammar. Now we have different approaches for sentence level processing. Sentence level processing के लिए हमारे पास अलग-अलग approach है. One approach can be semantic grammar. Other approach can be case grammar or conceptual parsing. So if we use semantic grammar, we need conceptual parsing. हमें ये दोनों relatable है. Or we can have other approximately compositional semantic interpretation. We can have other techniques. So what is the meaning of semantic grammar? Semantic grammar जो हमने पहले जो grammar देखा उसमें जो भी production rules थे वो rules से किस लिए थे? To ensure that what I can say, to ensure that the things which will be there is grammatically correct or not. So sentence है वो grammatic, we have not check anything regarding meaning, meaningful है या नहीं वो हमने देखा ही नहीं था. We just check about syntax. So what we do in semantic grammar, we'll consider syntax. We will consider not just syntax, we will consider syntax plus semantic plus pragmatic knowledge into जो हमने रूल्स जो हमने जनरेट किए थे ना उसी में हम ये डिफाइन करेंगे. तो जब आप पासिंग करोगे, फॉर दैट यू नीड कंसेप्चुअल पासिंग. So in that we will not just consider syntax, we will consider semantic knowledge also into single interpretation system, right? So that is how the simple thing, जो चीज हमने खाली syntax के साथ की, खाली उसके अलावा और भी बहुत सारे rules ऐड हम
करेंगे जो हमें सिमेंटिक नॉलेज का भी यूज करेंगे वो जनरेट करने के लिए, राइट. सो यू कैन यूज केस ग्रामर, you can use approximative composition semantic interpretation, right. So different techniques for अंडरस्टैंडिंग सिमेंटिक, जो बहुत सारी टेक्निक्स जो मैंने पहले आपको बताई, पोस्टरल लॉजिक है, सिमेंटिक नेटवर्क है, या फिर सिमेंटिक ग्रामर है, या तो फिर केस ग्रामर है. यू कैन यूज सच टेक्निक्स. एंड इफ यू टॉक अबाउट सिमेंटिक ग्रामर, इट इज द कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर. सिमेंटिक ग्रामर क्या है? इट्स अ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, राइट, जिसमें चॉइस ऑफ नॉन टर्मिनल प्रोडक्शन रूल्स, कौन से नॉन टर्मिनल्स होंगे, कौन से प्रोडक्शन रूल्स होंगे, इज गवर्न बाय सिमेंटिक एज वेल एज सिंटैक्टिक फंक्शन. ये ग्रामर में हम जो भी प्रोडक्शन रूल डिफाइन करेंगे, जो भी नॉन टर्मिनल डिफाइन करेंगे, दैट इज नॉट ओनली बेसिस ऑन सिंटैक्स, इट इज ऑल्सो बेसिस ऑन सिमेंटिक. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंटैक्टिक ग्रामर एंड सिमेंटिक ग्रामर, राइट. So in parsing we apply conceptual parsing, right, and we will assign the semantic actions for the sentence. What is the advantage of semantic grammar? अगर semantic grammar आपने यूज कर लिया तो क्या एडवांटेज है कि जैसे ही आपका पास कंप्लीट होगा, मतलब आपने जो भी पास जनरेट होगा या फिर जो भी आउटपुट निकलेगा, you can use that because you have applied semantic knowledge also. तो आपके पास सीधा मीनिंग होगा. पहले क्या था, आपके पास सिर्फ पास ही था, आप सिर्फ इतना चेक कर सकते थे कि आपका ग्रामर सिंटैक्टिकली करेक्ट है या नहीं. बट अब क्या होगा, इफ यू हैव यूज सिमेंटिक ग्रामर, यू कैन डायरेक्टली यूज दैट सेंटेंस फॉर विद द मीनिंग, क्योंकि उससे आपका सीधा इंटरप्रिटेशन मिल जाएगा, आपको दूसरी कोई भी चीज चेक करनी नहीं पड़ेगी. एंड समटाइम्स एज आई टोल्ड यू कि जो भी ग्रामर के मल्टीपल पार्ट ट्री बनते हैं, सिंटैक्स मैंने जब आपका एग्जांपल बताया तब आपको बोला था कि मल्टीपल पार्ट ट्री बनते हैं तो वो एम्बिगुअस ग्रामर बनता है. तो समटाइम्स वी हैव एम्बिग्यूटीज इन सिंटैक्टिक पार्सर, एंड इफ यू यूज दिस सिमेंटिक ग्रामर, दिस एम्बिग्यूटी कैन बी रिड्यूस्ड, बिकॉज हम जैसे मीनिंग ज्यादा ऐड करेंगे तो हमारी एम्बिग्यूटी उतनी ही रिड्यूस हो जाएगी, राइट. दैट्स इट. वन मोर थिंग, the syntactic issues that do not affect the semantic, ultimately we in natural language processing, ultimately we concern about meaning of the sentence. If some words are there or some words are not syntactically correct, grammatically sequence में नहीं है, but उसका कोई meaning नहीं बनता है, then we can remove that. So that will be advantages of semantic grammar. The disadvantage of grammar is number of rules. ये जो प्रोडक्शन रूल्स है ना, वो बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर दैट वी हैव thousands of rules. हमारे पास thousands of rules है, किसके लिए? For understanding the what I can say, the syntax only. And if we add semantic, it will be even more very high. So that is the drawback of semantic grammar, and it will slow down or it will create your parsing process expensive. It will make your parsing process very expensive. Fine. So you can use case grammar, you can use conceptual parsing, right? So different techniques that can be done for the semantic analysis. Semantic analysis, you can understand the meaning, but sometimes, say, सबसे पहले हमने ये स्टेटमेंट यूज किया सिंटैक्टिक एनालिसिस में कि हम सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं वो देखेंगे, हम मीनिंग के पास साइड नहीं गए. उसके बाद हमने सिमेंटिक एनालिसिस में क्या किया, सिमेंटिक एनालिसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया. उसमें सबसे पहले लेक्सिकल सिमेंटिक्स देखा. लेक्सिकल सिमेंटिक्स का मतलब ये है हर एक वर्ड का मीनिंग हम समझे, लेकिन हमने बाद में सोचा कि यार एक वर्ड का मीनिंग सोचने से पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझ में नहीं आता, तो हमें वर्ड्स को कॉम्बिनेशन करके, वर्ड का ऑर्डर देख के, वर्ड का कंटेंट देख के हमें पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझना पड़ेगा. तो दैट इज कॉल्ड सेंटेंस लेवल प्रोसेस है और कंपोजिशन सिमेंटिक. तो अब हमने सिर्फ सेंटेंस सारे वर्ड्स को कंबाइन करके एक सेंटेंस का मीनिंग समझा. बट देयर आर सम सिनेरियो वेयर द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस is dependent on other sentences which is used in the similar context. सेम सिनेरियो में अगर दूसरे कोई सेंटेंस यूज हुए उसके बेसिस पे भी आपके सेंटेंस का मीनिंग समझना पड़ेगा, एंड दैट विल बी कवर्ड इन द डिस्कोर्स इंटीग्रेशन
एंड pragmatic processing phase. ये जो आपका लास्ट फेज है उसमें हम जाएंगे. So to understand the single sentence, sometimes it is necessary to consider discourse and pragmatic context in which the other sentences are used. कौन से relatable sentence है वो हमें समझने पड़ेंगे, right? And there are some different relationship which hold between different sentences. One of the example is, we will be seeing different example. One is identical entities. For example, Bill had a red balloon. Bill के पास क्या है? Red balloon. John wanted it. तो यहाँ पे eat word है. What is the meaning of eat word? अगर हम आप समझिए कि आपने सिमेंटिक ग्रामर यहाँ पे इस सेंटेंस के लिए यूज किया, तो eat word का मीनिंग तो आपको समझ में नहीं आएगा ना. क्यों? It must be relatable to red balloon. समझ में आ रहा है? It must be relatable to red balloon. So and this reference must be there. ये समझना जरूरी है. तो then and only then we can understand the meaning of the sentence. And this reference, this type of reference are called as anaphora. इसको हम क्या बोलेंगे? Anaphora. We can have another option, part of the entities. यहाँ पे identical entities है. It can be part of the entities. So Hugh opened a book she just bought. Hugh ने क्या किया? उसने जो बुक अभी खरीदी उसको ओपन किया. The title page was torn. तो ये टाइटल पेज कौन से बुक के लिए बात कर रहे हैं? तो वी शुड अंडरस्टैंड इस स्टूडेंट जो करंटली जो परचेस की बुक, उसी बुक के टाइटल पेज के बारे में बात हो रही है. तो वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट रिलेशन. दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ द एंटिटीज. अनदर इज पार्ट ऑफ द एक्सचेंज. कंसिडर अ टैक्स. एक टैक्स कंसिडर कीजिए. जॉन वेंट ऑन अ बिजनेस ट्रिप टू न्यूयॉर्क and he left on a early morning flight. He is relatable with what? So this is that relation. जो पहला आपका एग्जांपल लेगा, आइडेंटिकल एंटिटीज एंड अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट. ये जो मॉर्निंग फ्लाइट है वो इससे आप क्या रिलेट कर सकते हो? ये जो मॉर्निंग फ्लाइट कहाँ पे जाएगी? मॉर्निंग फ्लाइट टू न्यूयॉर्क, क्योंकि वो कहाँ पे जाने वाले थे? न्यूयॉर्क. So taking flight should be recognized to the destination of this flight must be New York. That kind of relation must be created. Then not just part of the action, entities involved in the action. So my house has broken into last week. मेरे घर में चोरी हुई. Last week मेरे घर में चोरी हुई. They took TV and the stereo. उन्होंने क्या किया? टीवी और स्टेरियो चुरा के लेके गए. और what is the meaning of they? यहाँ पे they का रिलेशन क्या होगा? ये they किसके बारे में बोला जा रहा है? जिन्होंने मेरे घर में के बारे में, ये जो चोर लोग थे उनके बारे में बोला जा रहा है. राइट? दैट मस्ट बी अंडरस्टूड. Elements of the set. The decals we have in stock are stars, moon, item and a flag. Right? So we are talking about decals. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? Decals. So then the second sentence is I will take 2 moons. यहाँ पे जो 2 moons है वो आपके रियल मून की बात नहीं कर रहे, रियल चांद की बात नहीं कर रहे. Here moons means moon decals. समझ में आ रहा है? So that must be understood. Apart from that, we have to consider name of the individual, casual change. For example, there was a big snowstorm yesterday. The schools were closed. So what is the reason behind schools were closed today? आज स्कूल बंद होने का रीजन क्या है? It is a change rule. कि पहले ये एक्शन हुई थी, उसी के बेसिस पे ये एक्शन हुई. पहले जो कैजुअल कुछ हुआ, टास्क हुआ, उसके बेसिस पे दूसरे. प्लानिंग ऑफ द प्लानिंग सीक्वेंसेस and implicit presupposition. So there are different meanings based on which we can understand meaning. We can relate different sentences and we can do discourse and pragmatic processing. Right? So for discourse and pragmatic processing, the major focus must be on the dialogues. कौन किसके बारे में यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन सा context है. The model of the participant, the goal-driven character of the dialogue, the rule of conversation set by all participants. तो उन्होंने जो भी कौन से rules consider किए थे, we have to consider that. And using this, we can understand the meaning of the sentence in better way. Right. So that's it for this session. And this natural language processing unit is
Over.